Welcome to our channel. Today's our topic is maxillary artery. हमने एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के वीडियो में देखा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज टर्मिनेट इनटू टू आर्टरी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एंड maxillary artery at the level of neck of mandible. So we said that maxillary artery is the terminal branch of external carotid artery. Maxillary artery is related superficially to the lateral pterygoid muscle, or lateral pterygoid muscle is the muscle of mastication. देखिए maxillary artery is divided into three parts. First part, second part and third part. First part is known as a mandibular part. देखिए यहाँ पे वो है फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे है सेकंड पार्ट. It is known as a pterygoid part because it is related superiorly to the pterygoid muscle, and third part is known as a pterygopalatine part because it is related to pterygopalatine fossa. देखिए यहाँ पे maxillary artery is divided into three part. देखिए यहाँ पे first part of maxillary artery gives 5 branch, second part gives 4 branch and third part gives 6 branch. First हम देखते हैं branches of first part of maxillary artery. First part gives 5 branches. देखिए first deep auricular artery, देखिए मैंने यहाँ पे बताया it is the deep auricular artery. Deep auricular artery runs upwards and reach to the meatus, external oculis meatus, and supply the external oculis meatus. Second branch is the anterior tympanic artery. देखिए यहाँ पे anterior tympanic artery, it reaches upwards and supply the tympanic membrane and supply the middle ear. Third branch is the middle meningeal artery. देखिए मैंने यहाँ पे बताया it is the, देखिए यहाँ पे हमने देखी फर्स्ट डीप ऑरिकुलर ब्रांच, एंटीरियर टिम्पेनिक ब्रांच, थर्ड इज द मिडल मेनिंजियल ब्रांच. मिडल मेनिंजियल आर्टरी goes deep to the lateral pterygoid muscle and enters into the cranial cavity through the foramina spinosum, and it's further divided into the two branch, longer and shorter branch, and it's lie at the level of pterion. तो हमें पता है in the accidental condition most hemorrhagic part is the pterion. मोस्ट डैमेज कहाँ पे होता है? टेरियन में. और टेरियन के नीचे मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है. देयरफॉर मोस्ट डैमेज इन द एक्सटर्नल कंडीशन इन द मिडल मेनिंजियल आर्टरी. तो ये हो गई मिडल मेनिंजियल आर्टरी. फोर्थ आर्टरी इज द एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी. देखिए यहाँ पे है एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी, इट्स अलोंग विथ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी. देखिए एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी goes deep to the lateral pterygoid muscle through the foramina ovale and enters into the cranial cavity. And accessory meningeal artery, it supplies the infratemporal fossa. ये हो गई फोर्थ ब्रांच ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ maxillary artery. फिफ्थ ब्रांच इज द inferior alveolar artery. Inferior alveolar artery runs downwards and forwards and reach at the mandibular foramina. Before that, it divides into two branch, mylohyoid branch
and lingual branch. Mylohyoid branch supply the mylohyoid muscle and lingual branch supply the lingual. ये हो गई फिफ्थ ब्रांच ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी. हमने देखा फर्स्ट पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी के 5 ब्रांचेस. उसमें आएगी डीप ऑरिकुलर आर्टरी, एंटीरियर टिम्पेनिक आर्टरी, एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी, मेनिंजियल आर्टरी एंड द इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी. अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के ब्रांचेस के बारे में. देखिए सेकंड पार्ट it's also known as the pterygoid parts, which runs upwards and forwards and above the lateral pterygoid muscle and it gives 4 branches. देखिए मैंने यहाँ पे ग्रीन में बताया है. It gives 4 branches. First mesenteric branch which supply the masseter muscle. Second is the deep temporal branch which supply the temporal region. Third is the pterygoid branch which supply the lateral pterygoid muscle and fourth is the buccal branch. ये हो गई fourth branch of second part of maxillary artery. And third part, it is also known as a pterygopalatine part. Its first is enter between the two head of lateral pterygoid muscles, go forwards through pterygomaxillary fissures and then it enters into the pterygopalatine fossa. And third part of maxillary artery gives 6 branch. First, it gives posterior superior alveolar artery. देखिए यहाँ पे है posterior superior alveolar artery. Posterior superior alveolar artery arise before the, देखिए यहाँ पे pterygomaxillary fossa और ये pterygopalatine fossa. First it arise before the pterygomaxillary fossa. It runs downwards and forwards and through the alveolar canal and it reach at the molar and premolar teeth and supply the premolar and molar teeth. ये हो गई posterior superior alveolar artery. Second is the infraorbital artery. देखिए यहाँ पे मैंने ब्लू में बताया है. Second is the infraorbital artery. Infraorbital artery it's also arise before the, देखिए pterygomaxillary fossa. देखिए यहाँ पे pterygomaxillary fossa है. It's arise before the pterygomaxillary fissure. और infraorbital artery, देखिए यहाँ पे intraorbital artery enters into the orbit through the superior orbital fissure. It supply the orbit and gives 2 branch middle superior alveolar artery and anterior superior alveolar branches. देखिए यहाँ पे 2 ब्रांच बताया है, anterior superior alveolar branch and middle superior alveolar branch. And infraorbital artery through the superior orbital fissures reach at the orbit and it's also supply the upper lips, lacrimal sac and nose. ये हो गई इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी के बारे में. थर्ड इज द ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी. देखिए मैं बता दूँ कि ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी pharyngeal branch artery of the pterygoid canal and the last terminal branch is the spinopalatine artery. देखिए ये 4 ब्रांच है. It lies in the pterygopalatine fossa. तो देखिए तो ये 4 ब्रांच हो गई, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी एंड आर्टरी ऑफ pterygoid canal and pharyngeal branch. 4 is lies in the
टेरिकोपेलेटाइन फोसा। एंड फर्स्ट टू ब्रांच, देखिए मैंने यहाँ पे बताया इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी लाइज बिफोर द टेरिको मैक्सिलरी फोसा। देखिए यहाँ पे उसका ओरिजिन होता है। थर्ड ब्रांच हम बात कर रहे थे ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी के बारे में। ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी रन्स फॉरवर्ड्स एंड थ्रू द ग्रेटर पैलेटाइन कैनाल, it's right at the incisive teeth and supply the incisive teeth and also branches to the nasal cavity. Fourth branch is the pharyngeal branch. देखिए यहाँ पे मैंने बताया है fourth branch is the pharyngeal branch and fifth branch is the artery of pterygoid canal. Pharyngeal branch runs backwards and upwards and it is also supply the nasopharynx and the sphenoidal air sinus. Pharyngeal branch through the pharyngeal canal and it supply the nasopharynx. देखिए यहाँ पे फिफ्थ ब्रांच है आर्टरी ऑफ टेरिगोइड कैनाल। It also runs backwards and it also supply the pharynx and tympanic cavity. और लास्ट ब्रांच है स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी। देखिए यहाँ पे मैंने ब्लू में बताया है इज द लास्ट ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी इज द स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी। स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी passes medially through the spinopalatine foramina. देखिए ये स्पिनोपेलेटाइन फोरामिना medially passes through the spinopalatine foramina is enter into the nasal cavity and it supply the lateral wall of nose. तो ये हो गए ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। तो मैं फर्स्ट फिर से बता देता हूँ। मैक्सिलरी आर्टरी इट्स डिवाइड इनटू द थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट गिव्स 5 branches: deep auricular branch, anterior tympanic branch, medial meningeal branch, accessory meningeal branch, and the inferior alveolar branch. Second part gives 4 branch: mesenteric branch, deep temporal branch, pterygoid branch or lateral pterygoid branch, and fourth है buccal branch. ये हो गए 4 branch of maxillary, second part of maxillary artery, and third part gives 6 branch. देखिए posterior superior alveolar artery, infraorbital artery, greater palatine artery, spinopalatine artery is a terminal branch, and pharyngeal branch and artery of the pterygoid canal. This is all about maxillary artery. Thank you.